These are typically rotis that are kadak rotis consumed in the North Karnataka and Maharashtra belt, especially made out of jawar and bajra. Also, other millets that are used to make these rotis. These are also areas that um, consume these rotis because these have shelf life of up to 2 months. So it is used for travel and things like that, where you can actually carry on this healthy snack along with you. A lot of hotels and eateries have these rotis as part of their meal, either as freshly made rotis, which are bhakris, or as the kadak rotis that we see. So while we're looking at roti making as a business and consumption being extremely heavy, because we had looked at what is the kind of consumption pattern coming in for these rotis. It's almost like one roti production unit can be housed in each village of northern part of Karnataka. That is the kind of consumption that happens on each village level, as well as during certain festivities that come in. Looking at the urban consumption pattern as well, because these are made out of millet and traditionally eaten. A lot of joints in urban areas, especially in Bangalore, Dharwad, Hubli, we can see a lot of these rotis being sold as well. So the demand is very high. Most of these rotis are made by home-based entrepreneurs, mostly women entrepreneurs who are making these rotis in their household. Um, the traditional way of making the rotis remains with hand, where you're flattening the rotis with hands. That is where a lot of problem statements come in, related to uniform thickness that needs to be maintained for each roti, the actual exercise of roti rolling, and the muscle energies that are required, and the drudgery that is involved for making these rotis as well. Having access to any kind of mechanization for making these rotis. And lastly, looking at how do you have access to reliable power sources, even when you look at a machinery. So these are the problem statements that we started looking at when we started understanding this livelihood as well. So if you see the process, we look at atta kneading happening, dough being rolled, and then rotis being made, which are flat and circular in shape, roasting of it, and then packaging and selling. Because these rotis also have shelf life, you can store it up to 2 months, which means an entrepreneur can actually make huge volumes of rotis and keep selling it gradually over the days as well. So while we're looking at the technologies that could be looked at in this process, so along this process, there's dough kneading machines, there's dough rolling machines, which are the roti rolling machines, which are required for the first part of the processing. And then there are also solutions related to cooking that are required for making these rotis. Also, for packaging and selling of these rotis, all of these points can have some sort of technology interventions in it. Today, we are talking about dough kneading machine as well as roti rolling machine, where the dough could be mixed and made, and rotis can also be rolled out. Next Tuesday, we will be talking about clean cooking solutions, which also is the need of the hour. So I request everybody to join in for next Tuesday webinar as well. So while we're looking at this process, we will delve a little bit deeper into each technology and what are the different aspects and outcomes that this technology can look at. So I'd like to invite Maltesh to take up this section. Thank you, madam. So my name is Maltesh. So today I'll be discussing on the technology part of the roti rolling machineries. So we have different varieties of technologies.
like from the pedal operated to hand operated to the belt conveyor system. So the first one is like a pedal operated roti rolling machines. In the market, we can see there are a lot of machineries available. So those are like not efficient. So those consumes like around 800 watts to 1000 watts. So we work with the manufacturers to like bring the like energy consumption to the very less like energy efficient. So like this we have retrofitted one pedal operated roti rolling machines with the 150 watt DC motor. So this machine can make up to 100 rupees per day. So, and the technical specification, if you can see, so it works on the DC mode, DC system. So it consumes 150 watt of power. So it requires 24 volt voltage, and the capacity it can make 500 rotis per day. So in the 3 to 5 kgs per hour. And if you see the roti size, we can vary according to from 3 inches to 12 inches. So this machine can like make papad, chapati, and rotis, jawa roti or bajra roti. So we can adjust the size from 3 inches to 12 inches. And the solar system backup we have given like around 160 watt peak of power, and battery it can provide around 960 watt hour of energy. So it is a DC system, so we need like a one charge regulator for this. So in this only we have made another different model, so which can make 1,000 rotis per day. The same system can make 1,000 rotis per day by increasing the backup hours. So the backup hours we can see like the increasing the solar system to 200 watt peak, and batteries to the 1,440 watt hours. Yeah. Yeah, this is the one of the updated version of the like roti rolling machine. It is like a mini semi-automatic conveyor belt roti making machines. So it works on like a half HP DC motor. So with a 24 volt system, 24 volt voltage. So this can make 300 rotis per hour. So it's like semi-automatics. So it comes up with a dough kneading machine. So in the dough kneader, we have 0.25 HP like a quarter HP dough kneader machine. So in this machine, like dough kneading, after dough kneading, so we'll put the dough into the hopper in the belt conveyor system. So it will roll on the belt conveyor. So the cutter will be there. So it will cut the roti into like 8 inches to 12 inches as per the demand. And if you come up to you can see this machine can be suitable for the jowar like bajra, rice, and to make papad or pani puris also by changing the roller and cutter. So and if you can see the solar system, this can be work on like 400 watt peak to 600 watt peak of solar panel capacity, and a battery to like 2.4 kilowatt hour to 3.6 kilowatt hour of energy. And so the main key features here, like it is a compact in size. It can be like suitable in the like small houses having 10 square feet of workspace, and it can be easily like suitable for the like small scale entrepreneurs who are like making 1,000 or 1,500 rotis per day. For them, this is the like suitable technology. And here we need around like two persons to work on these machines. One person is to like to collect the rotis, one person like add the dough into the hopper. This is the like advanced technology like that one. So it is a semi-automatic belt conveyor system. It has a reverse belt. So after cutting the roti, the waste atta it will be directly go into the hopper. So here only one person is required to just to collect the rotis. The waste atta after collecting the roti, that it will go into the hopper like automatically. So this also comes up with a half HP DC motor system. So which works on the solar like 24 volt solar system. So again it also comes up with one donator machines. Like the capacity of the donator machine is like a 3 to 5 kg per batch. So it can need around within 5 to 10 minutes, it can need 3 to 5 kg of dough. Also, the capacity of this semi-automatic reverse belt conveyor system can make around 800 rotis per hour basis. That is like up to 15 kgs per hour. And also the same you can adjust the roti sizes from 8 inches to 12 inches as per the end users like some customers requirement. Also it works on the like around solar system around like 600 70 watt peak to 800 watt peak, and battery from 3600 watt hour to 4800 watt hour.
And the same thing, this system also can like make any kind of roti from the jowar, bajra, rice. Yeah. And this key features here, key features like for this machine, it is having like no, pack. Yeah. So it has a reverse belt, so there is a like reduction of one labor, so it can make easily. I'm getting slides not shared. Yeah, yes. So unlimited operation can be happen here. So there's a just to collect only rotis. Next. Yeah, this is the fully automatic machine. So it comes up the roti collector plate. So this machine can produce 1,000 rotis per hour, like around 15 kg to 20 kg of atta it can be produced in an hour. So here it comes up with a point to HP same atta kneader machine to knead the dough, and after kneading the dough it can be like put it into the hopper. So it will automatically take the waste atta into the hopper, and the roti can be collected in the dish bag. So here like just one person is required to just to like maintain the like just to operate the machines, just to take care of the machines whether it is properly cutting or not to take the machine. Also it is also having some like a die sizes from 8 inches to 12 inches like to make the rotis also. And the solar system for this is around 800 watt peak of solar panel is required, and battery 3600 watt of battery is required. This is also suitable for making papad, pani puri, rotis, jowar roti or bajra roti, rice rotis. Yeah, and this is a like operator like a very small scale machinery who are like making around 500 rupees per day or 800 rupees per day. For them, it is like very suitable. Those are having very less working area. So it like it can fit in like a 6 square feet workspace. So it works on the 0.25 HP DC motor, like quarter HP DC motor, same 24-volt system. It comes up with a quarter HP donator machine. So capacity is like around 200 rupees per hour, 8 to 10 kg of what it can process. Same here we can adjust the die sizes from 8 inches to 12 inches. For this machine, like if you can say the solar is required very less, around 200 watt to 300 watt peak, and battery like 360 watt of battery is required. This machine also can produce any kind of rotis, papads like for jowar and bajra. Like main key features like very it is a very compact machine. It can suitable in very small scale like small house also, and also it is like like very economical. So any like a small scale business who want to start the business, so they can easily go for this machine and start their business. And here we here like one person easily they can sit on the ground, they can easily collect the roti, and the waste atta they can directly put it into the hopper. So only one person can easily able to like operate this machine. Yeah. So now we have one of our champion individual from like Dharwad. So she's her name is Gangama Kumar from Marewada village. I will invite Mamta to like just introduce the end user and take the step. Thank you, Matesh sir. We have one of the entrepreneur with us. She is Gangama from Marewad village from Dharwad. ರೊಟ್ಟಿ ಮಷಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್? ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಮರೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದವರು. ನನ್ನ ಮಷಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. Yeah, I will translate in English. The end user name is Gangama Kumbar. She is from the Marewad village in Dharwad district. So like from last like 1.5 years, she is using the conveyor belt system. Yes. ಈ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 2.5 ಸಾವಿರ ತನಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 500 ರಿಂದ 800 ತನಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸರ್ ನಾನು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೈನುಗಾರಿಕೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ.
ಸೊ ಈಗ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸರ್ ಅದು ಹಸು ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಆಮ್ಯಾಗ ಅದಕ್ಕ ಬಾಳ ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗಾಗಿ ಅದು ತೀರ್ಕೊಂತ ಹಂಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಾಳ ನೋವಾಗಿ ಬೇಡಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಸಾಕೋದ ಅಂತಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಯ್ತಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Okay. So before starting this roti business, the end user like the Gangama was like doing uh, cow cow shedding, like milking, selling milk to the dairy. So due to some like health issue of this cows, like the cow died, like her business like income was stopped. So she thought of to like adopting this roti business since it is like having demand in their village. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಲೋನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ? ಸರ್ ನಾನು ಲೋನ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ PMFM ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು? ಸರ್ ನಂಗೆ 4,80,000 ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ EMI ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್? EMI 8,700 ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. 8,700 ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಹಾ ಸರ್. Okay. So yeah, to start the roti business, so she went for like PMFM scheme, to unlock the PMFM scheme, she went to Canara Bank to ask the loan. So for this business, they took around 4.2 lakh business in the applying a PMFM scheme. So the every month she's paying around 8,700 rupees EMI. So almost like from last 1 year only she's paying, and her daily income is as per her business, she is getting around 2,000 to 2,500 rupees every day. So like in season, like on off season, like it's around like 1,000 to 1,500 rupees per day. If we can say like in every month, if we consider during season she is getting 40 to 45,000 rupees per month, and like in off season she is getting 15 to 20,000 per month. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹಳ್ಳಿಯವರು ಒಯ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಸರ್. ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಈಗ ಡಾಬಾ ಖಾನಾವಳಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ. ಲೋಕಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. So basically she sells rotis in like marriage functions, like in her village, surrounded villages, like during the marriage functions, like home opening ceremonies and functions. So she sells around like 500 to 1,000 rotis every day to the function. Yes. ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? ನಮ್ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದು ಯಾವ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಸೀಸನ್ ಇರತ್ತೆ? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು? ಮೇಡಮ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೂ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ. ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2,000 to 3,000 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೀಸನ್. ಈಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಜೋಳ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ನಾವು ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸ್ವಂತ ಹೊಲದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರಿ? FSSAI ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದನೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ವರ್ಷ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಮೇಡಮ್? ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಈಗ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ FSSAI ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಲೋಕಲಿನೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಉದ್ಯಮ ಆಧಾರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ. So she has taken taken license from Gram Panchayat like Udyam Aadhar and FSSAI license. Okay, ma'am. Thank you. Another question. Yes. ಇವಾಗ ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಬಡ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಮಷಿನ್ ಹಾಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್?
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ 2 ತಾಸು ಮಳೆ ಆಗೈತಿ ನಮ್ಮೂರೊಳಗ. ಊರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಕರೆಂಟು ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾವು ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ನೆನ್ಸೋ ಹಂಗಾಗೈತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Yeah. You Maltesh sir. Yes. Actually, she was telling her own experience. Like yesterday, she has like supplied supply. She needs to supply around 200 rotis. So yesterday in their house, they don't have like in their village. She can able to make rotis and to supply the rotis to the customer. So that's why like she's like expressing her gratitude to Selco Foundation. Yeah. Thank you, madam. ಹಂಗೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Sure. ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಂದಿ ಫುಡ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ವೆಂಡರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ one of our like vendor like Hubli Nandi food machines. So we'll ask Ravi Kiran sir. हेलो सर, नमस्ते। आपने नंदी फूड मशीन्स जी कब स्टार्ट किया और कैसा आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कहाँ पे आप सेल करते हो, इसका बारे में आप कंपनी के बारे में थोड़ा बता दीजिए. जी सर, नमस्ते। मेरा नाम रवि किरण है। मैं नंदी फूड मशीन्स में एज अ मैनेजर बात कर रहा हूँ। बोले तो हमारा प्रोपरेटर का नाम आके कुमार विरक्त मठ करके है। वो ये बिजनेस लाइन में उसका 22 सेकंड एज में ये बिजनेस चालू किए है। जब से इधर रोटी मशीन बनाने वाला कोई भी नहीं था। बोले तो पहले ये बिजनेस चालू करने से पहले वो सिविल इंजीनियर थे। पहले उसके घर में भी वो रोटी बना के सेल करते थे। बोले तो बाय हैंड वो सेल करते थे। अभी क्या सोचा, उसको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज बहुत था, इसलिए वो क्या कीजिए, वो सिविल बेस्ड है तो भी उसको टेक्निकल बेस्ड बहुत वो उसमें माहिर थे। इसलिए वो क्या किए, इसमें छोटा मशीन एक मैन्युफैक्चर किए रोटी मशीन के लिए। रोटी मशीन मैन्युफैक्चर करके वो उसका खुद का हाउस के लिए थोड़ा यूज करने लगे। तब से क्या हुआ, उसको बहुत हेल्पफुल हुआ ना। ऐसा उसी गांव में और 2-3 मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमको भी ऐसा मशीन चाहिए करके गांव में जो इधर सारियाल में है ना, और भी थोड़ा रिक्वायरमेंट उसके रिगार्डिंग आया। तब से ये क्या चालू किए, इसमें ही कुछ नया इनोवेशन करने का सोच कर इसमें एक बड़ा वाला रोटी मशीन बनाए है। बोले तो उस मशीन में हम जो भी मशीन ले लो, मगर ये अभी छोटा मोटा दाम का मशीन है तो उसका क्वालिटी नहीं देते ज्यादा लोग। अभी अराउंड एक 2000-5000 है तो पैसा देखते हैं। अभी क्या होता है, ये बिफोर बिजनेस पर्पस ये मशीन परचेज कर रहे हैं ना, इसलिए हम मशीन में क्या किए, वैसा उसका कुछ बिल्ड कैपेसिटी हैवी करना करके सोच कर अभी JSW का स्टील यूज कर, और मोटर भी हम बिगर AC मोटर में ज्यादा से ज्यादा लोग लेते हैं। अभी उसमें क्या किया है, हम वीगार्ड कंपनी का मोटर डाले हैं और गियरबॉक्स हेलिकल का यूज करके मशीन मैन्युफैक्चर जो किया है ना, ये अभी इसमें ऑल टाइप्स ऑफ रोटी बनता है। इसमें जवार रोटी, बाजरे का रोटी, और गेहूं का रोटी, और चावल का ऑल काइंड ऑफ रोटी, नरम रहने दो या कड़क रहने दो, दोनों टाइप का रोटी भी बना सकते। और पापड़, राइस पापड़, चावल का पापड़, जो भी रहने दो वो सब भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इसमें। इसलिए हमारे पास जो भी मशीन से कस्टमर लेते हैं ना, आफ्टर परचेज उसके ऊपर हम 1 ईयर वारंटी और फ्री सर्विस भी दे देते हैं हम कस्टमर को। मीन्स कुछ भी मशीन लेने के बाद कुछ भी खराब, कुछ प्रॉब्लम तकलीफ ऑपरेटिंग टाइम में हुआ करके समझो, हम कस्टमर को साइट विजिट दे के उधर सर्विस करके उसको और एक बार डेमो दिखा के आते हैं इधर। बोले तो हमारे पास मशीन परचेज करने के बाद, उसको परचेज होने के बाद वैसा नहीं छोड़ते। मशीन का यूज होने कैसा यूज करना है उसका यूजर मैनुअल भी प्रोवाइड करते हैं, और कैसा कैसा आटा मिलाया तो कैसा कैसा रोटी आता है वो उसका सब डेमो देते हैं उसको। तब वो समझने के बाद वो इधर हम रिटर्न होने के बाद ही वो मशीन चला सकता है, चलाने के लिए लायक होने के बाद ही उधर से इधर आते हैं। 1 ईयर वारंटी विद फ्री सर्विस दे रहे थे ना। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो साइट विजिट जाके उधर सर्विस करके आते हैं। सर्विस चार्ज भी कुछ भी नहीं रहता है। ओके, थैंक यू सर। और आप मशीन्स कहाँ कहाँ पे भेजा
हमारे पास अभी सेल्को सोलर फाउंडेशन से अराउंड एक 1,000 to 2,000 तक रोटी मशीन सेल किया है विथ आटा मिक्सर। बोले तो परचेज ऑर्डर के रिगार्डिंग हम सेल करते हैं नहीं सर, डीसी मोटर के ओवरऑल हिसाब से। सेल्को से नहीं, ओवरऑल का जनरली का कितना किया है सर? ओवरऑल मोर देन 7,000 मशीन है सर हमारा। ज्यादा अच्छा। से ज्यादा हमारा कर्नाटका में ही सेल होता है। अभी जैसा जैसा शुगर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र से भी बहुत कॉल्स आ रहा है। बोले तो महाराष्ट्र में भी बाकरी ज्यादा चलता है अच्छा। महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, वो छोड़े तो इधर हैदराबाद, न्यू बोयनपल्ली, वो तेलंगाना, अच्छा। उधर भी सेल हुआ है। तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा लोग कर्नाटका से परचेज करते हैं। आपके पास कौन सा टाइप का रोटी मशीन है सर? हमारे पास अभी टोटल इफ है। जब हम कंपनी चालू किए थे ना, खाली दो टाइप्स का मशीन था। बोले तो मैनुअली हाथ से निकलने का रोटी रोटी निकलने का एक मशीन था। वो छोड़े तो रोटी आके डायरेक्ट प्लेट में गिरता था रोटी, वो ऐसा वाला था। दोनों भी 1 HP का मोटर इंस्टॉल रहता था पर आवर 12। बड़ा वाला चाहिए नहीं चाहिए। बोले तो वो मशीन का लेंथ 7 फीट लेंथ आता है ना। तो थोड़े कस्टमर्स क्या बोलते थे, मुझे ये दाम बहुत होता है और उतना वर्क स्पेस भी नहीं है हमारा पास, थोड़ा इसमें ही छोटा मिल सकता है क्या करके इंक्वायरी बहुत लोगों का था। अभी उसमें क्या किया है हम, 1 HP का छोड़कर हाफ एचपी में और 4 मशीन से इन्वेंट किए हैं। बोले तो 1 HP का 2 टाइप का मशीन है और हाफ एचपी का 4 टाइप मशीन है। हाफ एचपी का जो भी मशीन ले लो, कम से कम दाम बोला तो भी जो भी उतना उसका प्रोडक्ट, थोड़े लोगों के क्या रहते हैं, विद इन ₹1,00,000 में वो बिजनेस चालू करने वाले रहते हैं। थोड़े लोग उसके पास पैसा ज्यादा होगा मगर उसका वर्क प्रोसेस उतना ऑर्डर नहीं रहेगा। थोड़े लोग क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं हमारे पास, अभी 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 हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे करके बोलते हैं ना, वो थोड़े छोटे कैपेसिटी में सोचते हैं। मगर ज्यादा जैसा वो उसका बिजनेस बड़ा होता जाएगा ना, वो मशीन उसको कन्वीनियंट नहीं होगा। इसलिए हमारा बिल्ड कैपेसिटी कैसा के हम मशीन का, उसका बिजनेस कितना भी डेवलप होने दो, बाद में भी वो चला सकता है। बोले तो छोटा, कम से कम बोले तो हाफ एचपी का लिया तो भी एक बार चालू किया तो वो कंटिन्यूसली नॉट स्टॉप एक 4,000 to 5,000 रोटी निकालने तक कंटिन्यूसली चालू रख सकता है वो मशीन। उतना मीन्स 8 आवर्स नॉन स्टॉप चालू रखा तो भी मशीन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। यस सर, थैंक यू। ऐसा है जी। और सर, आपके पास कोई कस्टमर आएगा मशीन लेने के लिए, आपके पास जी कोई लोन का फैसिलिटी है सर वहाँ पे? हाँ सर, बोले तो पीएमएफएमई करके जो मोदी जी का स्कीम है ना, उसमें हम कोटेशन प्रोवाइड करते हैं बैंक में। वो सब्सिडी देने के लिए हाँ करके बोले तो जो भी आप हमारा कर्नाटका में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ना, उधर से एक डीआरपी रहता है, उसको हम डीआरपी तो एप्लीकेशन करके सब पीएमएफएमई का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब करके देते हैं। नहीं तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहता है ना, उधर भी जाके वो करवा सकते हैं। बोले तो ज्यादा से ज्यादा लोग पीएमएफएमई में बहुत यूजफुल है वो। 50% सब्सिडी मिलता है, जो मीन्स जो भी कोटेशन का टोटल ओवरऑल प्राइजेस है ना, उसके अंदर वो 50% कस्टमर भरना पड़ता है और 50% गवर्नमेंट के एंड से आता है वो। यस सर। और रोटी मशीन के बिना और कोई मशीन, और कौन सा मशीन आप मैन्युफैक्चर करते हैं सर? हम रोटी ज्यादा से ज्यादा मेन 90% फोकस हमारा रोटी मशीन प्रोवाइडिंग में है सर। बोले तो ये मशीन खाली रोटी के लिए उतना ही नहीं, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ रोटी बना सकते हैं और चपाती, पापड़ और पानी पूरी, समोसा का पट्टी, मीन्स एक ही मशीन में जूस का जो भी प्रोडक्शन करना है ना, वो सब बना सकते हैं। वो खाली उसको क्या कटर्स चाहिए वो इंस्टॉल करके देते हैं हम उसको। समोसा के लिए बिजनेस चालू करना है, ये मशीन कर ले सकता है। एक ही मशीन में आप 4-5 टाइप का बिजनेस चला सकते हो इसमें। और सर, इस मशीन्स में कोई जी सेफ्टी का इशू है क्या सर अभी ऑपरेट करने फिर में? नहीं नहीं, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ही नहीं इसमें। बोले तो जिधर जिधर वो थोड़ा खतरा रहता है ना, उधर हम सब स्टील गार्ड से कवर किए रहते हैं। वो छोड़े तो कुछ भी इसमें इशू करके नहीं है सर। सेफ्टी का इशू सब ले लिया है, जो इशू करके कुछ भी नहीं है अभी सर, अभी मशीन ऑपरेट करने के टाइम पे वहाँ पे सर। जी मशीन का थोड़ा इशू इशू आता है, सेफ्टी का इशू आता है, उसमें उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कैसे हम? बोले तो किस टाइप का इशू बात कर रहे हैं सर आप? अभी कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट है, रोलर है, जी वहाँ पे हम जी कैसे कर सकते हैं?
बोला। हाँ, कन्वेयर बेल्ट में बोले तो अभी कौन सा भी कस्टमर ले लो सर, अभी ज्यादा से ज्यादा लोग ये औरत लोग चलाते हैं, बोले तो वो ऑपरेटिंग करने के टाइम थोड़ा उसका कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। मशीन तो इजीली मूवमेंट रहता है, कुछ वैसा डेंजरस तो करके वैसा कुछ नहीं है। थोड़े लोग क्या करते हैं, उसका दुपट्टा ऐसा रहता है ना उसका, और उसका बाल जो रहता है ना, उसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि दूसरे तरफ ध्यान देने के टाइम वो कुछ साड़ी या उसका दुपट्टा उसके उसमें जाके थोड़ा रोटेट हो सकता है। इसलिए थोड़ा ऑपरेट करने से पहले उसका थोड़ा क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है ना, वो सब प्रिकॉशंस लेके काम कर कंटिन्यू कर सकते हैं सर। वो चढ़े तो उसमें कुछ वैसा डेंजर वैसा कुछ नहीं है इसमें। ओके। और सर इस मशीन पे जी जो भी मशीन का स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल है क्या, और कौन सा मशीन फ्रिक्वेंटली हम रिप्लेस कर सकते हैं? जी, हमारे पास जो भी मशीन ले लो साहब, हमें मशीन का मैन्युफैक्चरर है ना, कस्टमर को अभी 1 ईयर वारंटी विद फ्री सर्विस बोला है, तो भी मशीन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोटर रहा, गियरबॉक्स रहा, बेरिंग्स रहा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम। स्टील तो हम कंपलसरी जिंदॉल कंपनी का स्टील यूज करते हैं। मशीन एक 10 to 15 ईयर्स तक मशीन वो रखते हैं, कीप करते हैं बोले तो भी रस्ट पकड़ने का वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। मोटर में जो कार्बन ब्रशेस और डीसी मोटर का जो भी पार्ट है ना, मशीन लेने के बाद हमें वो प्रोवाइड करते हैं सर। बोले तो वो कस्टमर परचेज करने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी तक आना करके उसको प्रॉब्लम में ही नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हुआ तो हमें हमें एक इंटीमेशन दे दिया तो कस्टमर का साइट को जाके हम सर्विस दे के आते हैं। मोटर, गियरबॉक्स, बेरिंग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इन चारों आइटम में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो निकाल के नया पीस री इंस्टॉल करके देते हैं हम कस्टमर को। और जो भी मशीन में वेल्डिंग पार्ट है ना, वेल्डिंग किया सो वो भी खराब हुआ तो वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट में करके देते हैं सर, 1 ईयर और एक सर अभी होम बेस्ड कस्टमर्स रहते हैं, तो वो तक। लोग जी अभी मशीन कन्वेयर बेल्ट मशीन घर में लगाया तो उसको कुछ ओके। लोकली लोकल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट से कुछ परमिशन जी लेना चाहते कंपल हैं? जी, अभी इसको जो हम यूज करते हैं ना, हाफ एचपी का वो छोड़े तो 1 एचपी का मोटर यूज करते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा वैसा कुछ बड़ा पावर सप्लाई का जरूरत नहीं है। बोले तो अभी घर का जो वाटर मोटर रहता है ना, वाटर पंप रहता है ना, उसका मोटर कैपेसिटी जितना रहता है उतना इसको भी रहता है। मगर केईबी का रूल्स कैसा है, अभी एक बिजनेस रिगार्डिंग आप एक मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं बोले बोले तो वो कंपलसरी कमर्शियल ले करके बोलते हैं वो। इसलिए रूल्स के हिसाब से गया तो उसको रिक्वायरमेंट कमर्शियल लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज वो घर का करंट को ही चला सकते हैं, मगर कुछ प्रॉब्लम किरकिरी नहीं चाहिए बोले तो एक कमर्शियल लाइन लिया तो बहुत अच्छा है उसका। यस सर, थैंक यू सर। आप There are few questions that are coming in सर आपके लिए कि जी आप ईएमएफ लोडिंग को हैंडल करने में हेल्प करते हैं क्या, आपके पास आते हैं? ओके मैडम, हमारे पास जो भी कोटेशन लेता है ना, कोटेशन देने के बाद हमें वैसे ही नहीं छोड़ते। अभी समझो अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक डीआरपी रहते हैं। बोले तो थोड़े लोग के लिए हम रेफर किए रहते हैं ना, उसके पास जाने के बाद वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट खाली जो भी उसका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है ना, वो सब एक पीडीएफ कॉपी बना के उसको भेजा तो बस वो डीआरपी लोग जो भी है ना, वो सब एप्लीकेशन करके सब देते हैं। सपोज इसके प्रोसेस में कुछ डिले हो गया तो हम डीआरपी के साथ भी बात करके उसका जो भी प्रोसेस फास्ट होने के लिए जो जो करना पड़ता है ना, वो सब करके देते हैं हम कस्टमर्स को। अभी थोड़े लोगों को बैंक में क्या होगा, सब उसका सिबिल स्कोर सब अच्छा है तो भी वो क्या करते हैं, थोड़े लोग उसका बार बार डिले करते अभी टाइम नहीं है, थोड़े दिन के बाद आओ, थोड़े दिन के बाद आओ। ऐसा सब कस्टमर का सब डॉक्यूमेंट सब बराबर ही रहता है, फिर भी वो बैंक्स लोग थोड़ा डिले करते रहते हैं ना, तभी हम बैंक विजिट करके भी थोड़े लोग क्लियर हो जाता है वो। हम तो करते हैं, नहीं तो डीआरपी लोग तो बैंक को जाके उसको विजिट करके उसका प्रोसेस फास्ट करा देते हैं। और ये आप मेनली कर्नाटका में डीआरबी के साथ कनेक्ट करते हैं कि दूसरे स्टेट्स में भी कर सकते हाँ, खाली कर्नाटका में जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, सब डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करते हैं बोले। और अभी समझो हैदराबाद, आंध्रा, उधर का थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा गैप होता है ना हमारा, बोले तो लैंग्वेजेस प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए उधर ज्यादा से ज्यादा टच में नहीं रह सकते। अभी कर्नाटका में जिधर भी है हम बना के देते हैं, और बाकी छोड़े तो वो आंध्रा, सोलापुर उधर का हमारा जो थोड़ा लोकल वेंडर्स रहते हैं, बोले तो हम इधर मशीन लेने के बाद थोड़ा बैंक में वो जो भी हिंदी बात कर सकता है ना,
उसके साथ भी बात करके हम रिसॉल्व करते हैं। अच्छा, और जी ये जो आपके मशीन्स है उसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के रोटीज कर सकते हैं, जैसे बटर या नॉन बटर, ऐसे कुछ अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हैं या जी बना सकते हैं। बोले तो आटा मिक्सिंग प्रोसेस उतना ही इम्पोर्टेंट है इसको। अभी जैसा आप घर में हाथ से भून के बनाते हैं ना, वैसा ही इसको सेम आप आटा जैसा मिक्स जिस पोर्शन में मिक्स करते हैं, जितना बोले आटा में पानी मिलाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें रोटी बोले तो ज्वार का रोटी, बाजरे का रोटी, चावल का रोटी, रागी का रोटी और गेहूं का रोटी सब बना सकते हैं। अभी समझो इधर पालक रोटी बनाते हैं ना फंक्शंस में, बोले तो ग्रीन कलर का चपाती रहता है, हाँ वो भी बना सकते हैं। और राइस का रोटी में वो कांदा और वेजिटेबल्स मिक्स करके वो छोटा छोटा चॉप करके डालते हैं, बोले तो पराठा जैसा बनाते हैं, वो भी बना सकते हैं। और तंदूरी रोटी भी बना सकते हैं। जो मिक्सिंग पोर्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है। पानी पूरी, समोसा पट्टी, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस बना सकते हैं इसमें एक ही मशीन में। बोले तो कटर्स अलग अलग रहना पड़ेगा। बनाएंगे इस मशीन से वो फूल सकती है। वो आटा मिक्सिंग पोर्शन के ऊपर डिपेंड होता अच्छा। है। अभी तो समझो अभी थोड़ा आटा में पानी कम करके मिलाया तो नहीं फूलता है। पूरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले तो क्या होता है, बहुत नरम मिलाया तो आता है पूरी। सपोज वो बहुत पानी थोड़ा कम डाल के मिलाया तो पूरी नहीं फूलता है। वो छोड़े तो पानी पूरी सब बनता है इसमें। तो जो मिक्स है उसको थोड़ा ट्रायल एरर हाँ करके ही मिक्स का हाँ हाँ हाँ, आइडिया आता है। मिक्सिंग पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग रोटी के लिए लेते हैं ना, इसलिए हम रोटी का कुछ भी किरकिरी नहीं है, रोटी सब आता है। थोड़े लोग अभी समझो पानी पूरी, थोड़े लोग आटा मिक्सिंग पोर्शन में तो कुछ गलत किया तो वो तेल में कुछ फ्राई करने के बाद थोड़ा फूल नहीं फूलता है, थोड़े थोड़े फूलता है, ऐसा होता है वो। ओके ओके, ठीक है, समझ गई। फिलहाल तो पार्टिसिपेंट्स की तरफ से और क्वेश्चंस नहीं है, जो थे वो ऑलरेडी आपने पूछ लिए, पर आप लाइक करेंगे अगर और क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको जी थैंक जी वेल। So moving ahead in the section, we are looking at business feasibility. So usually production happens all through the year with either 3 hours working times or 8 hours, depending on what kind of production is there. Usually rotis are made with jawar, ragi, or different sort of millets that are there. They are sold from 4 to 5 rupees that we have seen in rural areas. But if we see urban areas, it is also sold at as high as 10 to 15 rupees in cities like Bangalore and Hooghly that we have seen. Most of the entrepreneurs look at a B2B sort of business where they are either selling it to a dhaba or a hotel where they get bulk orders of 300, 500,000 rupees in one go, which is what usually happens in on a daily basis. But there's also a B2C segment that they look at, which is especially catering to festivities and marriages, where they get again bulk orders where rotis are distributed to the guests either as return gifts or they are part of the function where it is served. So that is also where entrepreneurs end up getting a lot of bulk orders, especially in the marriage season. So investments that are required for a business like this are, of course, the machineries that we spoke about, atta kneading and roti rolling machines. The space that is required for making, because there's also even if it is at home, you need a dedicated cooking of routines happen. So those kind of spaces are required. Either the rent that is required for these spaces or an allocated area within the house is required. You do need labor. So this is again dependent on the production size as well as how many family members are also involved. But that consideration is required. Water supply, because for atta kneading and for further cooking as well, you need a little bit of water for making these rotis. Transportation, especially for delivery of finished and fine. Then raw material, we're looking at the base raw material that is required for rotis, as well as
basic oil, spices, the plastic sheets that are required for drying, other vessels for mixing as well as keeping the dough. Um, those are required. I will now request my colleague Supriya to come in to take us through the business model. Good afternoon, everyone. My name is Supriya, and I'll walk you through the business model. So we'll first discuss about the setup cost and the financing. Moving on to then we'll move on to business model, and then we'll look at the monthly and the annual profitability. This is how the setup cost breakup would look like. So the machine cost is 2,25,000 and the solar cost is 1,39,000. And if the entrepreneur is availing a loan of say 80% of the capex and 20% is down payment, then the breakup structure would look like this. Within the loan contribution is 2,80,000 and the margin money would be 80,000. And EMI per month for a tenure of 60 months with a rate of interest of 12% would be around 6,000. Now here we have taken a case of an end user who has availed PMFME subsidy like even the vendor said earlier. So she is availing 35% of the subsidy from the central government and 15% from the state government. Moving on. So the business model is like what you can see. The rated capacity of the machine, like we discussed earlier, is 800 to 1,000 numbers per hour. So the end user told that the quantity that she sells per day is roughly around 250 to 300. Now that depends again on your sales channel. And she works for about 25 days a month and almost all throughout the year she works. And so the quantity sold per month would be 7,500. Now for a bulk order, this particular end user gets about 8 numbers in a year, but that again is very less when you look at the rated capacity of the machine. So in order to maximize the utilization, you can always increase your market linkages so as to receive more number of bulk orders, and the selling price per roti is 5 rupees. That again depends on your respective competitors in that particular region. Like we discussed earlier, in metro cities it almost goes up to 10 rupees per roti. So the revenue per month without the bulk order, that is based on the average daily production of 300, would look something like this, 37,500. But when you account for the 8 bulk orders, her revenue per annum would be 5,70,000. So we have first, I'm just showing you all first the total monthly cost without the bulk orders, that is based on the average production, accounting for 2 number of labors where she pays a daily wage of 250 rupees per labor, and the packaging charges. Her per packet consists of about 20 rotis in number, and she sells it per packet wise. So the packaging charges involves 150. The raw material cost, she basically sells jowar rotis in bulk number, whereas ragi, maize, and bajra rotis, they are less in number. So when you account for the raw material, that is the millet or the grain cost, it comes up roughly about 10,000 per month, and the milling charges, wherein per kg charges are 7 rupees, so it accounts for 2,000 rupees. And transportation, she told that she does mobile sales, wherein she goes on a two-wheeler and does some amount of sales. So that fuel charges accounts for 1,500 monthly. There is some amount of wastage as well happening, that accounts for 500, and the LPG cost, wherein the baking of the rotis consume your domestic LPG what she uses, accounts for 400 rupees. So the total cost is roughly 21,500. Next. So this is how the profitability would look. Like we discussed earlier, the revenue per monthly on based on the average production is 37,500. But if like Sneha mentioned earlier, in cases like festivals or during the marriage season, they do receive bulk orders. So when you consider 2 orders in a month, if I consider bulk orders in a month along with the average daily production, the revenue would be 67,500. And in a year with 8 bulk orders, it is a 5,70,000.
So the cost is also accounted as per the um, charges that she incurs, and the yearly cost would be 3,09,000. Operating profit would be 2,60,000, and net profit after accounting for the EMI installment would be 1,84,000. So if you look at the per bulk order profit that she would make would be or the end user would make would be roughly about 9,000 to 10,000. So the more the number of bulk orders, more is your profit. That particular number 9,000 to 10,000, what I said was excluding your profit incur that you get from your average production. So only solely bulk order profit would be 8 to 9,000 or 10,000. So if you increase your sales, definitely the net profit also would be higher. Next. So this is the QR code for the business model wherein you can edit as per your business and look at the respective numbers. Moving on to Maltesh. Yeah. So here I will take the technical part. Like we have like the different solution packages are there for the rotating with us. So like pedal operated roti rolling machine with the dough kneading machine, the solar system specifications would require around 160 watt peak of solar panel system and 960 watt hour of battery energy. So this can be suitable for jowar, roti, chapati. Then the machinery cost and solar cost like around 35,000 for machinery and around 53,000 for the solar. So total around 88,000 for the pedal operated roti rolling machine. So which can make 5 rotis per day. So second version like 1,000 roti per day, which is a pedal operated same pedal operated roti rolling machine. So for this we need around 200 watt peak of solar panel capacity. So battery should be around 1,400 watt. Water of energy. So same this machine can also can be make around jawar roti, chapati, papad, bajra roti. So here again same the total cost it would be required around 1,30,000 here. And in third we have like semi-automatic and belt conveyor system which is not having the reverse belt. So it can make around 800 rupees per hour. The solar system here requires around 600 watt peak to 800 watt peak of hour. And battery would be around 4.8 kilowatt of hour of energy. Yes. Yeah. And for this, the machine cost is around 1,55,000 and the solar cost will be around 1,30,000. The overall system cost will be around 2,85,000. And fully automatic belt conveyor system, so it can make which can make 1,000 rupees per hour. So in that also it requires around 600 to 800 watt peak of energy, watt peak of solar panel capacity, and battery will be around 4.8 kilowatt of energy. Here the machine cost is around 2,30,000 and so solar will be around 1,70,000. The so total system cost will be around 4 lakh rupees. Also one more is the reverse without reverse belt system, semi-automatic belt conveyor system. So the machine total cost of the system will be around 1,55,000. The machine cost will be around 65,000 and the solar will be 90,000. Here also we need around 600 watt peak of solar panel capacity and the battery will be around 3.6 kilowatt hour of energy. So basically, it is called as a like Choto model system. And one more is like a super mini belt conveyor belt system. So it requires around 1,20,000 rupees for the total system, like including solar and machine. The machine cost will be around 50,000 and solar will be around 70,000. So this can make around 200 rupees per hour. Yeah, this requires around 300 watt peak of solar panel capacity and 1.4 kilowatt hour of battery system. Yeah, these are the technology part. Like just you mentioned, what is like what are the parts of the machine like for alternating where is the DC motor, what is the kneading machine, and for the pedal operated machine, what are the roller and pressing mechanism, pressing lever operated. And here in the belt conveyor system, we have the where the dough flattening roller and cutting roller and some of the spare part details here.
And this is like a process in the while making in the pedal operated roti machine. So first we'll knead the dough in the atta kneading machine. Then we'll make the dough in the plat and keep it on the roller. So we'll keep one plastic layer below, and above that this flat dough. Again one more plastic sheet. So by using leg, the pressure will be put on the roller, so it can roll the roti. So this is a conveyor belt mechanism process. So here also same, the dough will be kept into like put into the roller. So it will make the flat sheet. So that sheet will be cut by the roller. So this is a basic single line diagram of the system, pedal operated system, which is having the solar system and battery and the alternating machine and floating machine. So this is the single line diagram of the conveyor belt system. And we have like a lot of vendors for suppliers for the roti rolling machines. Like we have Nandi Food Machines and the Blue Star Automobiles, Star Associate Industries, Ambika Engineering, and Ojresh Engineering. So here their details are like mentioned here. In the post installation like alternator, after working, so we need to clean the machines, all the machines like alternating, roti rolling and belt conveyor system. We have to clean with soft cloth. And for every rotating parts, we need to grease we have to apply the grease like every 1 week after using. And also we have to make sure this nut and bolts must be like tightened for after every use, because of the vibration, sometimes the nut and bolts will be loose. And also for motor, motor and for the battery, we need to check every month. We have to check the distilled water is properly maintained or not. And also the oil pipes must be whether they are sealed or not. Those we have to check. And also in the warranty, how to check the within, if it is any problem happens with the machine, if it is within a warranty, we have to inform the vendor to replace the spare parts. And these are like basic SOPs for like maintaining the solar panels. So just to every week we have to clean the panels every week or every 15 days to remove the dust and anything to charge properly. And for battery, every time we have to check the battery the distilled water level to ensure and the battery should be kept in a proper ventilation space. And we should not use any detergent or anything to clean the solar panels. Just to we have to pour water and just use it clean with a soft cloth. And also for battery, you should not touch both terminals. And you should be kept in a proper ventilation space. Keep it away from the any flaming or smoking place. Yes. Thank you so much, Maltesh, and thank you so much all the speakers to present today. Thank you, Ravi Kiranji, for taking time out and explaining us through all the details. I think while we interacted with everybody, the questions that were coming in were taken in. So there are no more questions that we need to discuss now. So thank you so much for joining in. See you next week again. Thank you. Thank you. Thank you to Much. all the speakers. Thank you.